Lesson 05. A piece of string. रस्सी का एक टुकड़ा। रस्सी का एक टुकड़ा ये फ्रांसीसी अदब से एक मास्टरपीस लिया गया है। इसको लिखने वाला गाइडी मपासां है। मपासां describes and declares peasants and prostitutes as heroes. Introduction. Quote, Though the mills of God grind slowly, yet they grind exceedingly small. Mr. Hubert, the central character of the story, was a simple countryman. He was falsely accused of picking a pocket-book. He tried his level best, but could not prove his innocence. The pocket-book was found later, but his countrymen made him a laughing stock. Mr. Hubert took this to his heart and passed away. After his death, a great flood came and took away all the people who accused him with their belongings. Hence his innocence was proven by Almighty. तारफ में हम देखते हैं सबसे पहले एक कहावत, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं। इस कहानी के हिसाब से ये कहावत सादक आती है। कहानी के मरकजी किरदार मिस्टर ह्यूबर्ट एक सादा लौ देहाती आदमी थे। उस पर बटुआ उठाने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। उसने अपनी सतह पर पूरी कोशिश की, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित ना कर सका। बटुआ बाद में मिल गया, लेकिन उसके हमवतनों ने उसे हंसी का निशाना बना डाला। मिस्टर ह्यूबर्ट ने इस बात को अपने दिल पे लिया और इंतकाल कर गया। उसकी मौत के बाद एक बड़ा सैलाब आया और उन तमाम लोगों का जो उस पर इल्ज़ाम लगाते थे सामान बहा कर ले गया। चुनाचे अल्लाह ताला की तरफ से उसकी बेगुनाही साबित हुई। At the end of market day, the rich people with vehicles of all kinds, carts, gigs, wagons, dump carts gathered at a great big hall for a great meal. There were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast, and an appetizing odor, a smell, of roast beef. Leaf and gravy dripping over the brown skin, which increased the appetite and made everybody's mouth water. Everyone told his affairs, his purchases and sales. The diners discussed the crops and the weather, which was favorable for the green things but not for wheat. Suddenly, at the sound of drum beat in the court, everybody rose from the seats except a few ones who still had the food in their hands. After the drum beat had ceased, the drumbeater called out to the people, who were now attentive and impatiently waiting for him to call out the public announcement. बाजार के दिन के इख्तिताम पर अमीर लोग हर किस्म की गाड़ियों, छकड़ों, गिग वैगनों, डंप कार्ट्स के साथ एक बड़े हाल में ज़बरदस्त खाने के लिए जमा हुए। रोस्ट में मुर्गियां, कबूतर और मटन की टांगें थीं और भुने हुए गाय के गोश्त की बू थी। भूरी जिल्द पर पत्ते और ग्रेवी टपकती, जिससे भूख बढ़ जाती है और हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। सब ने अपने मामलात, अपनी खरीदो फरोख्त बताई। खाने वालों ने फसलों और मौसम के बारे में तबादला ख्याल किया, जो सब चीज़ों के लिए साजगार था, लेकिन गंदम के लिए नहीं। अचानक दरबार में ढोल की थाप की आवाज़ पर सब लोग नशिस्तों से उठ खड़े हुए, सवाए चंद के जिनके हाथ में खाना था। ढोल की थाप बंद होने के बाद ढोल बजाने वाले ने उन लोगों को पुकारा जो अब तवज्जो से और बेसब्री से उसके अवामी ऐलान का इंतज़ार कर रहे थे। It is hereby made known to the inhabitants of this place, and in general to all persons in the market, that a black leather pocketbook containing 500 shilling and some business papers was lost on the road between 9:00 and 10:00 in the morning. The finder is requested to return the same to the mayor's office or to Mr. James, the caretaker of this public hall. There will be a reward of 20 shillings. After the meal had concluded, the chief of the police appeared on the scene. He inquired, "Is Mr. Hubert here?" Mr. Hubert, seated at another end of the table, replied, "Here I am." The police officer went up to him and said, "Mr. Hubert, will you please accompany him to the mayor's office? The mayor would like to talk to you." Mr. Hubert, surprised and disturbed, followed the police officer. उस जगह के बासियों और बाजार के तमाम लोगों को आम तौर पर मुतल्ला किया जाता है कि एक स्याह चमड़े का बटुआ, जिसमें 500 शिलिंग और कुछ कारोबारी कागजात थे, सुबह 9 बजे से 10 बजे के दरमियान सड़क पर गुम हो गए थे।
तलाश करने वाले से दरख्वास्त की जाती है कि उसे मेयर के दफ्तर या उस अवामी हाल के निगरान मिस्टर जेम्स को वापस कर दें। 20 शिलिंग का इनाम होगा। खाना ख़त्म होने के बाद पुलिस चीफ जाए वकुआ पर नमूदार हुआ। उसने दरियाफ्त किया, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ हैं? मेज़ के दूसरे सिरे पर बैठे मिस्टर ह्यूबर्ट ने जवाब दिया, मैं यहाँ हूँ। पुलिस अफसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, क्या आप मेरे साथ मेयर के दफ्तर जाएंगे? मेयर आपसे बात करना चाहेंगे। मिस्टर ह्यूबर्ट हैरान और परेशान होकर पुलिस अफसर के पीछे गया। The mayor, a stout, solid-looking, serious usman, was waiting for Hubert. Mr. Hubert, he said, you were seen this morning to pick up the pocketbook lost by Mr. James. Mr. Hubert, the simple countryman, looked at the mayor astounded, to be surprised or shock someone, and already terrified by the suspicion resting on him. Why me? Me? Me picked up the pocketbook. Yes, you, yourself. By my word of honor, I never heard of it. But you were seen. I was seen with the pocketbook. Who saw me? Mr. Mignana, the harnessman, saw you pick up the pocketbook. Mr. Hubert, the old man, remembered, understood, and flushed with anger. Oh, him. Yes. He saw me pick up this string here. And as he said so, he drew out the little piece of string from his pocket. मेयर एक मजबूत, ठोस नजर आने वाला संजीदा आदमी ह्यूबर्ट का इंतजार कर रहा था। मिस्टर ह्यूबर्ट, उसने कहा, आपको आज सुबह मिस्टर जेम्स का खोया हुआ बटुआ उठाते देखा गया था। मिस्टर ह्यूबर्ट, सादा देहाती ने मेयर की तरफ चौंक कर देखा और पहले ही उस पर पड़ने वाले शक से घबरा गया। क्यों? मैंने बटुआ उठाया? हाँ, तुमने खुद। मेरी इज्जत की कसम, मैंने उसके बारे में कभी सुना नहीं, लेकिन आपको देखा गया था। मैं बटुए के साथ देखा गया था। मुझे किसने देखा? मिस्टर मनाना, हार्नेस वाले ने तुम्हें बटुआ उठाते देखा। मिस्टर ह्यूबर्ट, बूढ़ा आदमी, याद आया, समझा और गुस्से से बहक गया। ओह, वो हाँ, उसने मुझे यहाँ इस रस्सी को उठाते देखा। और ये कहते ही उसने जेब से रस्सी का छोटा सा टुकड़ा निकाला। But the mayor shook his head and said, you will not make me believe that Mr. Mignana, who is a man of worthy credence, trust, mistook the cord for a pocket-book. Mr. Hubert, the peasant, furiously, angrily, lifted his hand, spat at one side to attest his honor, and said in the most exasperating, extremely annoying, tone, it is, nevertheless, truth of the good God, the sacred truth. I repeat it on my soul and my salvation. After picking up the object, you stood there, looking a long while in the mud to see if any money had fallen out. The good soul, Mr. Hubert, choked with indignation, anger, and fear. How anyone can tell such lies to take away an honest man's reputation? How can anyone? लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया और कहा, आप मुझे यकीन नहीं दिलाएंगे कि मिस्टर मनाना, जो एक काबिल एतमाद आदमी हैं, ने डोरी को बटवा समझ लिया। मिस्टर ह्यूबर्ट, किसान ने गुस्से से अपना हाथ उठाया, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए एक तरफ थूक दिया और इंतहाई गज़बनाक लहजे में कहा, बहरहाल ये अच्छे खुदा की सच्चाई है, मुकद्दस सच्चाई, मैं उसे अपनी रूह और अपनी निजात पर दोहराता हूँ। इस चीज़ को उठाने के बाद आप वहाँ खड़े रहे, काफ़ी देर तक कीचड़ में देखते रहे कि कहीं कोई पैसा गिरा है या नहीं। अच्छी रूह, मिस्टर ह्यूबर्ट का गुस्से और खौफ से दम घुटने लगा। कोई कैसे एक ईमानदार आदमी की साख छीनने के लिए ऐसे झूठ बोल सकता है? कोई कैसे कर सकता है? There was no use of Mr. Hubert's protesting, for nobody believed him. Mr. Mignana repeatedly maintained that Hubert had picked up the pocketbook. For an hour both men abused each other. Then at his own request Mr. Hubert was searched. Nothing was found on him. Finally the mayor discharged Hubert with warning that he would consult the public prosecutor, a legal representative who officially accuses someone of committing a crime, and ask for further orders. As he left the mayor's office, people surrounded and questioned him with serious curiosity. Nobody believed his story of the string. Instead, people laughed at him. Mr. Hubert went along stopping his friends, giving them his statement and presentation,
turning his pocket inside out to prove that he had nothing. मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि किसी ने उन पर यकीन नहीं किया। मिस्टर मनाना ने बार बार कहा कि ह्यूबर्ट ने बटुआ उठाया था। 1 घंटे तक दोनों ने एक दूसरे को गालियां दीं। फिर उनके अपने कहने पर मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। उसके पास कुछ नहीं मिला। आखिरकार मेयर ने ह्यूबर्ट को इंतबाह के साथ फारिग कर दिया कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से मशवरा करेंगे और मज़ीद अहकामात तलब करेंगे। मेयर के दफ्तर से निकलते ही लोगों ने ह्यूबर्ट को घेर लिया और शदीद तजस्सुस के साथ उनसे सवाल किया। किसी ने उसकी रस्सी की कहानी पर यकीन नहीं किया। उसके बजाय लोग उस पर हंसे। मिस्टर ह्यूबर्ट अपने दोस्तों को बताते और रोककर प्रेजेंटेशन देते, अपनी जेब अंदर से दिखाते हुए ये साबित करने के लिए कि उनके पास कुछ नहीं था, आगे बढ़े। All they said was, "You old rascal, who does things of which you disapprove, but whom you still like? Get out of here." Mr. Hubert went to the village telling every man he knew about his adventure, but he only met with incredulity, disbelief. It all made him ill. The next day in the afternoon, a man named George returned the pocketbook and its contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. George claimed to have found the pocketbook on the road to the village market, but not knowing how to read, he had given it to his employer. The news spread like fire in the neighborhood. Mr. Hubert was also informed. He was in triumph. उन्होंने सिर्फ इतना कहा, "ए बूढ़े बदमाश, यहाँ से चले जाओ।" मिस्टर ह्यूबर्ट गांव गए। हर एक आदमी को जिसे जानते थे अपने एडवेंचर के बारे में बताते जाते, लेकिन उन्हें सिर्फ बेएतबारी का ही सामना हुआ। इस सब ने उसे बीमार कर दिया। अगले दिन दोपहर को जॉर्ज नामी एक शख्स ने बटुआ और उसमें मौजूद चीज़ें बटुए के मालिक जेम्स को वापस कर दीं। जॉर्ज ने दावा किया कि उसे गांव के बाजार की सड़क पर बटुआ मिला है, लेकिन वो उसे पढ़ने का तरीका नहीं जानता था कि इसलिए अपने मालिक को दे दिया। ये खबर महल्ले में आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इतला दी गई। वो फतह में था। What grieved me as much was not the thing itself as the lying. There is nothing so shameful as to be called a liar. Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him. Those are lying excuses. They said behind his back. Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. He consumed his heart over this and wasted away before the very eyes of the people. People started to tell the story of the string to amuse themselves and told it in a manner of soldier who had been on a campaign and told about his battles. Hubert's mind, touched to the depth, began to weaken day by day. चोरी के इल्ज़ाम से इतना दुख नहीं पहुंचा जितना झूठा कहलाए जाने से, क्योंकि झूठा कहलाए जाने से बढ़कर शर्मनाक बात नहीं है। उसने जो भी वजूहात बताईं, लोग उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। ये झूठे बहाने हैं, उन्होंने उसकी पीठ पीछे कहा। ह्यूबर्ट ने अपनी इज्जत नफ्स और किरदार के लिए इस शर्म और बेइज्जती को महसूस किया। उस पर उसने अपना दिल भर लिया और लोगों की आंखों के सामने ज़ाया हो गया। लोगों ने चस्के के लिए रस्सी की कहानी सुनानी शुरू कर दी और उसे सिपाही के अंदाज में सुनाते जो किसी मुहिम पर था और अपनी लड़ाइयों के बारे में बताए। गहरी हसास तबीयत वाला ह्यूबर्ट का दिमाग दिन ब दिन कमज़ोर होने लगा। Towards the end of the month he took to his bed. He died in the first week of the following month. In the delirium, fever accompanied by delirium/fits, of his death struggles he kept claiming his innocence, reiterating, "A piece of string, a piece of string. By my word of honor I did not lie," and he died. It is said that a great flood in its great wrath carried away the people and all their belongings. The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. It was engraved, to cut words, pictures or patterns into the surface of metal, on his tombstone, years after his death, "Here lies a man who told nothing but truth. Here lies the man who would not prove his innocence, but the flood proved it." महीने के आखिर में वो अपने बिस्तर से लग गया। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसका इंतकाल हो गया। अपनी मौत की जद्दोजहद के डिलीरियम में
वो अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा, दोहराता रहा, रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का एक टुकड़ा, मेरी इज्जत की कसम मैंने झूठ नहीं बोला। और वो मर गया। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा सैलाब अपने शदीद गज़ब में लोगों और उनका तमाम सामान बहा कर ले गया। ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाही को बर्दाश्त कर गई। उसकी मौत के बरसों बाद उसकी कब्र के पत्थर पर कुनंदा था कि यहाँ एक आदमी दफन है जिसने सच के सिवा कुछ नहीं कहा। यहाँ वो आदमी है जो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका, लेकिन सैलाब ने उसे साबित कर दिया। Happy learning!